एक्चुअली हुआ क्या था आपका कि इस्लाम के आने के साथ लूटिंग abducting of the women, okay, rape incidences, that was very high, okay, and that was the reason for the system. Yes, Satya sir. Prakash Yes, sir. child History, sir. marriage history. Yes, So sir. when you are more in upper Delhi University से है ना? जी sir. So that is history itself, graduation. Yes, sir. Okay. So which part you are more interested in, ancient, medieval, or Medieval. medieval? Yes, sir. Why? Sir, ancient history is often talked about, and efforts have been made to make the invisible visible by virtue of the efforts of the great historians working thoroughly. And modern history, the attempt to the sources, the easily availability of the sources have made it again a lucrative sector. However, the transition period has been overlooked, and there's lot of studies to be done into it. So what are the five things that determine that medieval period is a transition from ancient to modern? What are the five major things? The entire change in the political setup, like from the switch from centralization to decentralization, fall of mighty empires and upcoming of the regional empires have been seen as one of the major identification or markers for the transition. Then, Apart from that, the economic activities have also seen a decent, it is often, some few historians often termed as 18th century as a dark age, an era of dark age. That is also termed the no, how this medieval period, Yes, sir. that's a transition from ancient to modern. That's evident, that's respect there because there's a change in the entire. Three things you told me. Yes, sir. I asked about five things. Yes, One sir. is your fall of bigger empire. Yes, sir. And rise of regional. Decent. Yes, sir. That is one. Yes, sir. Second, economic decentralization. Yes, sir. Yes, What sir. are the other things? The blend, the Islamic the influences that can be everywhere, that is visible in the culture, Indo-Islamic culture that talks about the arrival of Islam and the influences that have consolidated That it is one. also. Okay, next. Apart from that, the transition can also be seen in terms of. So these three have a spillover effect on Next, four. trade and commerce had seen a That is decline. economic one. Okay, four. With due permission, I want some time to. Yes, yes, yes. Nice. The society. The society had we have right from the ancient society we have women scholars like Lopamutra, Gargi coming. However, in case of the societal, we can in the medieval society the underrepresentation of women and Why? marginalization Why? of What women. was the reason? The women have been marginalized over the period of time. Why? How that happened, that one society that was very profound in terms of women representation, and suddenly that was the women was regarded as a second class citizen in medieval time. How this happened? So that was the confluences of many cultures coming together. That cultural event that can be seen as a result of toxic exchange of culture as well. What are the toxic exchange? So prevalent of the women and the invader, the origin countries of the invaders didn't have such. Do you know about Islam? No, The sir. foundation of Islam is gender equality. Yes, sir. Okay, then how you were saying that that is a toxic element? So what are the toxic elements you are talking about? How the cultural influences or confluences led to the degradation of women's status? Deeply rooted, strong simultaneous upgradation of patriarchy also led to. So what is your post preference? Sir, I would prefer for Bihar Administrative Service as my first preference. Do you know the actual reason? Actually हुआ क्या था आपका कि इस्लाम के आने के साथ looting, abducting of the women, okay, rape incidences, that was very high. Okay, and that was the reason for the system. Yes, Satya sir. Prakash, Yes, sir. child marriages, all these started with the advent of Islam. Yes, sir. Okay, Yes, and that sir. was the reason that degradation of
स्टेटस ऑफ वुमेन दैट इज स्टार्टेड। यस सर, उसके पहले उनको पूरा प्रेफरेंस दिया हुआ था। जी और सर, जब इनके साथ आना शुरू हुआ तो चाइल्ड मैरिज इसलिए किया गया था ताकि बच्ची जो है वो बड़ी होगी तो एबडक्ट कर ली जाएगी। जी सर, ठीक है, पर्दा सिस्टम भी इसीलिए था कि अगर कोई लड़की जो है वो बहुत खूबसूरत है तो उनका जो है किडनैपिंग हो। जी सर, ओके, जी सर, बाय द इन्वेडर्स। जी सर, अगर मान लीजिए कोई वो है कोई विधवा है, विडो है, तो सती प्रथा भी इसीलिए आया था कि विडोज आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ओके, यस सर, so to prevent all this, so that was a transition part. यस सर, Okay, degradation of the women status. यस सर. Sir, I know something is lacking, but I don't know that is something. So I would definitely. See, interview is all about communication. Yes, sir. That is the first. Yes, sir. Okay. Communication doesn't mean that if you're proficient in English, it is not necessary. Whoever that is sitting there, okay, this is Bihar. Okay, Yes, so sir. whoever that is sitting there, it may be possible they are not that much proficient in English. Okay, sir. So whenever I am asking something in Hindi, that's the noble idea we have. Ki whenever the member they are asking something in Hindi part, you must have to reply in Hindi. Okay, sir. Say bilingual. Yes, sir. Yes, sir. Because this is Hindi area. Yes, Okay. sir. Either you are going to accept it or not. Yes, sir. I Even if accept you are going it. to admit in this administration partner, 99% things you have to do in Hindi. Yes, sir. Okay, 99%. Even you are comfortable with it or not. Even the people who are being DSP from they studied in Delhi University and all this. Okay. मुख्यमंत्री जो डांस कर सेक्रेटरी तो इंग्लिश में प्राइवेट बोलने लगे। हाँ, तो see होता क्या आपका कि interview is all about communication. Yes, sir. Okay. You are at very tender age, okay, and you can get a very good marks in interview. Okay, there is a chances you can get a very good marks, but you need to modify yourself. Yes. Okay, modification means what? Again, I am telling you. One thing is what interviewer they are the alpha people. Okay, alpha means what? They are going to dominate you. Okay, now when you said history repeat itself, what I told you, you don't need to make the mistakes twice. Yes. Then you suddenly replied, history repeats itself. Yes, sir. It means what? That's why I told you. Okay, when you went to analyze it, the both things are same. Same. Yes, sir. Okay, but you replied suddenly. It means what? You are trying to contradict. See, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा. जी सर. It's not about knowledge. Yes, sir. You are just a roll number there. 2104 लोगों का वहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है? और you are just a roll number. जी सर. आपका नॉलेज, आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है. Your CV is just a piece of paper. आप आएंगे, इंटरव्यू देंगे 5 मिनट के लिए, कोई दूसरा आएगा आके बैठेगा, फिर कोई तीसरा आके बैठेगा, ठीक है? उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर देंगे, कोई मतलब नहीं. दैट इज द रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. जी सर. ओके, उनको बस इस चीज से मतलब होता है कि यू आर हम्बल, यस और नो. यू आर सबमिसिव, यस और नो. ओके, यू आर ओबीडिएंट, यस और नो. बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन दैट रिक्वायर्स इट. क्यों आर्मी में बोला जाता है कि एक बॉस बैठा हुआ है तो आपको एकदम खड़ा रहना है, मतलब खड़ा रहना है. आपका गर्दन जो है ऐसे है, मतलब ऐसे है. यस, एक इंसिडेंस हुआ था सर वहां पे छत्तीसगढ़ में. एक आईएएस जो है वो एकदम 12 बजे 1 बजे का दोपहर था, ठीक है? और उसमें मोदी जी गए थे छत्तीसगढ़. वो आईएएस जो धूप में चश्मा लगा के खड़ा था, ठीक है? वहां से निकले और शोकॉज नोटिस इशू हुआ. वाई? एवरीबॉडी नोज कि दैट इज द नेसेसिटी. 12 बजे 1 बजे धूप में जब गर्मी एकदम पीक पे है, उस समय जो है हमारे यहाँ भी बीकानेर हुआ, हम लोग ट्रेनिंग कराया. उनको कोई मतलब नहीं कि आप कौन है. और वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. कोई मतलब नहीं है कि आप कौन है, आपको कितना नॉलेज, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया. डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन. यस सर. आर यू गेटिंग? यस सर. तो अगर जब तक अपने आप को सबमिसिव नहीं बनाएंगे ना, और सबमिसिव का मतलब कहते हैं सर हिंदी में कंफर्टेबल, तो आपको हिंदी में बताना चाहिए. जी सर. Interview is all about communication. It's not about, see, that is a misnomer in everybody's mind. Okay, interview is all about knowledge. Interview knowledge का पार्ट नहीं होता. जी सर. आपका knowledge is already tested in the prelims and mains. Interview में वो लोग आपके पर्सनालिटी को जज करते हैं, एटीट्यूड. तो वो आपके पर्सनालिटी को जज करेंगे. और पर्सनालिटी को जज करने का तरीका होता है कम्युनिकेशन, ठीक है? बहुत बार आप देखिएगा, बहुत बार सर को पता है कितना नंबर आया. Maybe his English is not proficient. सर को कितना नंबर आया था पता है?
कितना? गेस करो, गेस करो। अपने बोर्ड मेंबर सबसे टॉपर। He was a top. 19 marks. Why? His English is not that much proficient. Okay, but why? नेचुरल जो चीजें पूछा गया उसको नेचुरली बता दिया। सबमिसिव होना, आपको नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना नॉलेज है। लिटरली आई एम टेलिंग यू। अच्छा, अभी आपने इतना देर में कितनी बार सॉरी बोला? सर ने प्रयास किया, नेक्स्ट नेक्स्ट आप बोल सकते थे कि सॉरी सर, लेकिन आपने नहीं बोला। उनको कोई मतलब नहीं, लिटरली अगर ये मिसनोमर आपके माइंड में है ना, नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोलिए। कॉलिंग यू टू टेस्ट योर नॉलेज। आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपसे वो कुछ पूछते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता होता है, उनको भी पता है कि इसको पता नहीं, ठीक है, आप उसमें आंसर्स जो है वो बनाते हैं। जैसे आपने बोला टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट दैट इज नॉट देयर। यू मे थिंक कि आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉक्सिक एलिमेंट। आपको ये लग सकता है 2 मिनट के लिए कि आप अगर इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलते जा रहे हैं तो मुझे टॉक्सिक एलिमेंट पता नहीं, ओके, लेकिन वहां पे जो लोग बैठे हैं ना, दे आर 60-65 इयर्स ऑफ एज, दे आर क्वाइट नॉलेजेबल एंड क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन देयर फील्ड, ओके। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी एक छोटा सा गलती जो है ना, वो आप जैसे पिछली बार मैंने देखिए, अगर हम लोग 120 मार्क्स अगर वो करते हैं ना टोटल है आपका, तो यू आर स्टैंडिंग समवेयर अराउंड 80, ओके। थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, यू कैन गेट 85 और 90, लेकिन अगर एक मिस्टेक कीजिएगा ना, एक चीज उनको बुरा लगेगा, यू विल स्लिप टू 55 और 60 और 65। मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टेक आप कर दे जाके, जी सर, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग हियर 80 पे आप है, 80 पे है, जो नॉलेज का लेवल है आपका वो 80 पे है।